Hello everyone, welcome back to my channel Social Guruji SK. Now we are in the second part of this chapter, India size and location. In this part we are going to read about latitude and longitude. Yes, the India's extent, latitudinal extent and about the longitudinal extent. Before starting this topic, I'm going to relate some special things. It means first of all, what is latitude? So I just made a globe and I just divided this globe into two parts, two halves. This is 0 degree called equator. This line is called equator and this line divides the whole globe into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere. So this kind of horizontal line at any place in our globe is called latitude. Latitude. And this kind of vertical line at any place in our globe is called longitudinal line. Longitude. So it is clear. Now the extent of India's latitude. So India's latitudinal extent is from the south side, it means from the Kanyakumari position, it is up from 8 degree 4 minute north. And if we take the Indira point, which is now submerged into water, the Nicobar Islands last point, Indira point, which is now submerged in water, then we find 6 degree 4 minute north. So 8 degree 4 minute north is from the Kanyakumari, it means Cape Comorin side, and 6 degree 4 minute north from the Indira point to this part, means this northernmost part up to 37 degree 6 minute north. This is the latitudinal extent of India. 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute. Again 6 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north. Now coming towards longitude. The longitudinal extent of India is started from this part. It means in this position of Run of Kutch, we get a value of 68 degree 7 minute east to this part of Arunachal Pradesh, Vijayanagar or Kibitu is come 97 degree 25 minute east. Is came under 97 degree 25 minute east. So this is the longitudinal value of our India, 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. I hope this topic is clear. Now this topic and this topic is clear. We are moving towards the third topic, hemisphere. Before starting this topic, hemisphere, I have a doubt in my mind. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कभी कभार हमारे माइंड में आता है कि भाई ये नॉर्थ है तो यहाँ एन है, नॉर्थ, इट इज ओके. ये साउथ है, देन व्हाई नॉर्थ, व्हाई एन? अगेन द सेम थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूड. ये ईस्ट है तो ईस्ट, ठीक है, बट ये तो वेस्ट है इंडिया का, तो फिर यहाँ ईस्ट क्यों? दिस इज द मेजर क्वेश्चन which sometimes arise in our mind. So the answer is, according to the latitude, this 0 degree, from the 0 degree equator, India is in this position. It means India is in the northern hemisphere. This upper part is called northern hemisphere and the lower part is called south. This whole upper part is northern hemisphere and the whole this lower part is called southern hemisphere. So India is in northern hemisphere according to latitude. So we have to write it northern. Now moving towards next, it means why east? So according to longitudinal line, here we found 0 degree Greenwich.
This is the part of 0 degree Greenwich. So from this 0 degree Greenwich, if we move towards this direction, then we came in the eastern hemisphere. And if we move on this very direction, then we go in the western hemisphere. So India is in eastern hemisphere. According to longitude, India is in eastern hemisphere. So that's why we write east and east on both the values. So togetherly, if the question asks you, then what is the exactly in which hemisphere India is exactly? So the answer is India is in northeastern hemisphere. Northeastern hemisphere. Now, this topic is cleared. Now, the fourth topic, the time zone. So, before starting the time zone topic, I have to clear two things. The first thing is, what do you mean by prime meridian and what do you mean by standard meridian? Prime meridian and standard meridian. We have 2 points over here. So the definition of prime meridian is the 0 degree line which passes through London's Greenwich is called prime meridian. ठीक है, जो 0 डिग्री लाइन लंदन के ग्रीनविच से क्रॉस किया वो प्राइम मेरिडियन है. एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन मीन्स the standard line or the local timeline of any country which passes exactly from the middle of that country according to the longitudinal extent, it is called standard meridian. I hope these two topics are cleared. Now, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं आपको लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड मैथ सिखाऊंगा कि कैसे हम अपने ज्योग्राफी से रिलेटेड मैथ कर सकते हैं, बना सकते हैं. सो सबसे पहला कि किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालते हैं, इसके लिए बहुत इजी सा एक ट्रिक है, बहुत इजी सा एक मेथड है जो हमें भी फॉलो करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले दोनों वैल्यूज को लिखना पड़ेगा. 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, फिर से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए. जब आप ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 32 मिनट ईस्ट, देन 8 and 7 15 का 5 कैरी 1 10 and 6 16 165 डिग्री 32 मिनट ईस्ट. अब आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे. जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 6 जा 8, then 2 and half. So this is the approximately standard meridian of India which passes through this point. Look here, this point is exactly 82 degree east. We have a name called UPs. This is UPs Mirzapur, or we said it Allahabad's Naini. So if anyone asks you that from where the standard meridian of India crosses, then we have two options. The first is UP's Mirzapur and the second is Allahabad's Naini. I hope this method and this math is cleared to all of you. Now we just move towards the mathematics. It means how we can calculate any area's standard time or any area's longitudinal extent if some facts are given over here. Clear? Now here is our question. If the standard time of India is 1730 hours, then
Find out the standard time of Dubai, whose standard meridian is 50 degree east. So, like mathematics, to solve this question, we have few things. Like, what are the given? First of all, we have to write the given. So, हमारे पास क्या क्या given है? हमारे पास इंडिया का लोकल टाइम मालूम है. इंडियाज लोकल टाइम ये हमें मालूम है, जो कि अभी हो रखा है 7:30 आवर्स. यह सारी वैल्यूज मैंने लेट लिया है. इट मींस इट इज नॉट डिफाइंड एंड परफेक्ट. हम लोग सिर्फ एक समझने के लिए लेट लेकर बनाना है पूरे क्वेश्चन को. 17:30. एंड द सेकंड थिंग व्हिच इज गिवन इज Dubai's standard meridian. Now it is 50 degree east. So अब हमें क्या क्या निकालना है, इसमें क्या क्या पता करना है. सबसे पहले जो हमें पता करना है वो ये कि we all know India's standard meridian is, as we know India's standard meridian is 82.5 degree east. So now हमको ये सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज्यादा है और ये कम. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये ग्लोब बना लें एंड दिस इज 0 डिग्री, सो दुबई 50 डिग्री पे है, यानी कि दुबई यहां होगा जो कि इंडिया से पहले आएगा, एंड देन इंडिया यहां पे है जो कि 82.5 पे. तो इसके हिसाब से दुबई का समय हम लोग ये समझ लेंगे कि इंडिया के समय से पहले आएगा. इंडिया का समय से दुबई का समय कम होगा, वो पहले आएगा. तो अब इसको कैसे बनाना है? अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों के समय को माइनस कर लेना है. इट मींस 82 स्टैंडर्ड मेरिडियंस को माइनस करना है. सॉरी, 82.5 minus by 50, so we get 32.5. ये दोनों का डिफरेंस आ गया. अब हम इसे चेंज कर लेंगे टाइम में. तो जैसे हम इसे टाइम में चेंज करेंगे तो हमें 32 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, एंड हाउ 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. इफ यू वांट देन चेक दैट वीडियो. नाउ इसे हम इनटू कर लेंगे 4 मिनट से, तो ये बन जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 मिनट, और ये हाफ डिग्री तो प्लस 2 मिनट. इट मींस ये बन गया हमारा 130 मिनट. 130 मिनट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 hours 10 मिनट. अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही होगा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है. तो 60 इंटू 2 120 प्लस 10 2 घंटा 10 मिनट. अब जैसा मैंने पहले ही बताया कि दुबई चूंकि 50 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री से पहले दुबई आएगा, देन इंडिया आएगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सबट्रैक्ट इट. ध्यान देने की बात यहीं पे ये है कि अगर हमारे पास किसी ऐसे वैल्यू को हमें निकालना है टाइम जो कि गिवन के बाद आता है, तो हम वहां पे टाइम ऐड करते हैं. और अगर गिवन के पहले का वो वैल्यू निकालना है किसी एक ऐसा लोकेशन का जिसका गिवन, इट मींस स्टैंडर्ड मेरिडियन गिवन से कम है, तो वहां पे हम माइनस करते हैं. डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला. सो नाउ एज वी ऑल नो, क्वेश्चन में जो गिवन है, इंडियाज टाइम इज इक्वल्स टू 7:30 आवर्स. तो 7:30 आवर्स को हम लोग सब जानते हैं कि 7:30 आवर्स का मतलब हो गया कि 5:30. ये पीएम का टाइम होगा, क्योंकि ये 24 आवर्स के क्लॉक सिस्टम के हिसाब से 17:30 लिखा हुआ है. अब इसमें से हम 2 घंटा 10 मिनट माइनस करेंगे, तो 2 घंटा 10 मिनट सब्ट्रैक्टेड. 30 में से 10 गया 20,
एंड 5 में से 2 गया 3. सो आवर आंसर इज, अभी जिस समय इंडिया में 5:30 हो रहा होगा, उस समय दुबई में इस लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू से 3:20 हो रहा होगा टाइम. So this is the method to calculate the standard time of any place. अब हम इसी में गुना भाग कर लेंगे. सपोजिंगली अगर हमें, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें 82 से ज्यादा का वैल्यू निकालना होता तो हम यहां ऐड करते, कम का निकालना था तो सब्ट्रैक्ट किया. सेम प्रोसेस हम, अगर हमें दोनों जगहों का सिर्फ टाइम दिया रहता तो भी हम वहां का स्टैंडर्ड मेरिडियन निकाल पाते by this same process. We have to little bit calculate it. If you have any problem, then you just write on the comment section. And I hope मेरे हिसाब से in this chapter all the topics are covered. If you have any doubt, any query, then please write on the comment section, and do not forget to give thumbs up and subscribe my channel. And अपने ये प्यार स्नेह बनाए रखें. ऑन आवर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के दिया कि सर एक मुगल साम्राज्य पे, मुगल किंगडम के ऊपर एक वीडियो बनाइए. सो इट इज माय प्रॉमिस टू दोस दैट इन अपकमिंग 1 or 2 days मैं एक पूरा वीडियो फुल मुगल साम्राज्य के ऊपर बना के डालूंगा, जिसमें उनका पूरा डिटेल होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर टू शाह आलम द्वितीय. It means the last ruler, when Britishers almost came in India and they just started taking over their, set upping their colonies and taking the parts of India. So इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you very much.